session of 7th Legislative Assembly. Now we will take up the question hour. Start question number 19, Sri Lambotang. Speaker sir, my supplementary question is HS. When will the power grid hand over the transmission line to power department for full functional of two substations at Mebo and at Ngopok? And the second one is whether government is aware that the power line from Borguli to Seram was washed away by Siang flood on last part of August 2023, and whether government passed on instructions to restore the power line as Namsing Circle, entire Namsing Circle of East Siang and Paglam subdivision of Lower Dibang Valley district is reeling in dark. Thank you, sir. सर जो स्टार क्वेश्चन 19 है उनका रिप्लाईज तो सुनकर खुशी होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर था वो 10 MVA का था, दूरा में जो ट्रांसफार्मर था, इसीलिए जो पीक डिमांड 11 मेगावाट है, लेकिन उससे सिर्फ 8 मेगावाट ही जनरेट होता है। तो इसीलिए और उसके लिए भी ये एरेटिक पावर जो प्रॉब्लम होता है सिर्फ मेबो के लिए नहीं है, ईस्ट सियांग के लिए, पासीघाट के लिए भी होता है। और एक कारण है कि जो हमारा जो रंगा नदी हो वाया जीरो दापुर जो आलो पासीघाट जो है 300 किलोमीटर कवर करके जाता है, वहाँ में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होता है, फिर गाछ गिरता है, लाइन डैमेज होता है, उसका कारण से भी एक एरेटिक जो पावर सप्लाई है। लेकिन एक अच्छा खबर है कि जो एक छपकवा रोइंग जो अभी लाइन हो गया, छपकवा रोइंग पासीघाट 132 kV जो लाइन हो गया है, उसके कारण से ये जो पावर सप्लाई बहुत इम्प्रूव हुआ है। ये 68.70% से अभी 83.1% हो गया, ये इम्प्रूव हो गया है आपका जो पासीघाट जो सब डिवीज़न का पावर सप्लाई में वो था। और एक बात है कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए जो 10 MVA जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने अब जो अभी पूछा है कि नापित में जो 2x10 MVA जो सबस्टेशन है और 2x31.5 जो 132-33 kV सबस्टेशन निगलोक जो है, ये पावर ग्रिड ने बनाया है। तो ये जो है आपका नापित का जो है नवंबर 2023 में ख़त्म हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, और जो निगलोक का है दिसंबर 2023 में ख़त्म हो जाएगा। ये कमिटमेंट दिया है पावर ग्रिड ने। और एक अच्छा खबर है कि आपके लिए जो further to strengthen the existing transmission and distribution system, additional 66.6 km of 33 kV transmission line from 10 MVA at Dora 132/33 kV power substation to Mebo is being constructed by a power grid under comprehensive scheme and shall be commissioned by नवंबर 2020। एक स्पेशल लाइन आ रहा है आपका मेबो के लिए, ये भी नवंबर में हो जाएगा, विच विल एनहांस द रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई इन मेबो सर्कल। तो ये आपके लिए अच्छा खबर है। एक तो ये का पहला है। दूसरा जो है जो वास्तव में हो गया है उसका बारे में ये तो सवाल में है नहीं है, जो आपका सप्लीमेंट्री है, मैं खबर लेके डिपार्टमेंट से खबर लेके आपको बता दूँगा। Start question 17, Sri Purpasring. वो
हमारे शिक्षा मंत्री से सर एक सप्लीमेंट करना चाहूँगा, और साथ साथ में मैं इस सरकार को भी मैं धन्यवाद देते हुए, क्योंकि कल हमें ये जानने को मिला है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें से मेरा जो सवाल था उसका जवाब भी उसमें मिल जाता है। क्योंकि सर हमें पता है कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो इस राज्य का हो या भारतवर्ष के हो, सर हम लोगों ने एक स्लोगन दे रखा है कि सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर। क्योंकि पूरे सर राज्य में 50 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, और ये सर सर इस सदन से सर मुझे सर खड़ा होकर कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सर आपने इसका जो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है सर, आप लोगों ने शायद इसको हामी भर दिया है। लेकिन मेरा सर सवाल यही रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय से कि सर इसको आप कब तक इसको रेगुलाइज करके देंगे और किन किन को देंगे, क्योंकि उसमें हेडमास्टर 50 है, वार्डन 50 है, हेड मिस्ट्रेस वो भी 50 है। न केवल हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस बल्कि बहुत सा जो टीचर्स गण भी है, साथ साथ में जो हमारे उसके साथ में जो बाकी सह कर्मचारी है सर, मिसाल के तौर पे MTS, पियोन वगैरह वगैरह, तो उनको भी कंसिडर कर रहा है और कब तक कर रहा है। अगर सकने से सरकार से ये दरख्वास्त रहेगा, कम समय है, इलेक्शन से पहले अगर ये करके देगा तो मेरा ख्याल से जो स्लोगन है हम लोगों का सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, इससे बहुत बड़ा योगदान मिलेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी। माननीय स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सप्लीमेंट्री पूछा कि ये कब तक रेगुलाइज करेंगे या ये, स्पीकर सर आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि अरुणाचल में KGBB स्कूल जो है, ताइवान की जो क्लास 6 से क्लास 8 तक 13 नंबर से, और टाइप 2 जो क्लास 6 से क्लास 10 तक है और 13 नंबर से, और टाइप 3 जो क्लास 6 से क्लास 12 तक है और 7 है। टोटल 50 KGB स्कूल्स हैं, और इसमें सर पूरा KGB में टोटल जो टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस और वार्डन, फुल टाइम टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स एंड अदर कुकमैन, वार्डन सब लगा के सर 946 लोग हैं। और इसकी जो रेगुलेशन के हम तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए जो पे एनहांसमेंट के लिए जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, ये 946 लोगों को 22% मिलेगा, एरियर 22% इंक्रीज मिलेगा, और साथ साथ में 3% DA भी मिलेगा। और ये जो लागू की बात करा कि हम हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि ये सितंबर से उन लोगों को लागू करेगा बोल के। सर, आई हैव वन सप्लीमेंट सर। सर ये हाई सर सब्जेक्ट सर जरा सा हटके है सर, लेकिन चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के विषय में बात कर रहा है, मुझे फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा सर, तो उस मौका को मैं फ़ायदा उठाते हुए सर, हम सर जिस क्षेत्र से आते हैं सर, हमारा तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हम लोग सर जो बोटी जो हमारा जो शिक्षा हम देते हैं सर बच्चों को सर अप टू मिडिल स्कूल सर, तो उसमें हमारा जो सर वहाँ का जो बोटी टीचर है सर, पिछले सर 30 ईयर्स बैक सर, 30 साल पहले उन लोगों को नौकरी दिया गया है, और सर वो लोग बखूबी अपना सर जो धर्म है वो निभा रहा है, जो शिक्षा बच्चों को जो दे रहा है बहुत अच्छा से दे रहा है। लेकिन समस्या सर ये है कि सर उन सर जो गुरुजी है सर, जो टीचर है सर, आज उनका तनख्वाह महीना में केवल 15,000 रुपया है, तो बाकी जो कैजुअल स्टाफ को भी शायद 15,000 16,000 मिलता है। तो मेरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री सर, आप को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, और जितने भी जो हमारे जो कैबिनेट मंत्रीगण हैं, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इनका भी अगर बोटी टीचर को भी अगर 5 या 10,000 अगर उनका तनख्वाह अगर बढ़ा दिया जाएगा तो सर ये भी सोने पे सुहागा होगा सर। हमारा वाकई में जो हमारा सर क्षेत्र में सर हम लोग बोटी को सर हम लोग बहुत ही सर उसको हम लोग
तवज्जो हम देते हैं सर। तो मंत्री जी से मैं सर दरख्वास्त करना चाहूँगा इस सदन का इस मंच को फ़ायदा उठाते हुए सर, दूसरा बार आप सर जब कैबिनेट मीटिंग में आएंगे तो सर इसको भी सर आप जरूर सर इसको आप निवेदन रहेगा सर, बॉडी टीचर को भी सर आप कृपया कर दीजिएगा सर। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो सप्लीमेंट्री जो सदस्य ने पूछा बोथी लैंग्वेज टीचर के लिए, बोथी लैंग्वेज टीचर के लिए हमने ऑलरेडी सर टीचर को दिया हुआ है और खामती को भी हमने दिया है। और इसकी जो बोथी लैंग्वेज टीचर से हमें आज तक कोई मेमोरेंडम या कोई ऐसे आया नहीं कि उनको पे को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ आएंगे तो हम विचार करेंगे और सरकार उसको सही ढंग से करेंगे सर। ये नहीं मांगने पे भी दे देने से अच्छा लगेगा। सर वो सर उसका आप एग्जामिन सर करेंगे वो सर इंश्योर कर दिया जाएगा कि सर कल ही सर आप तो सर दरख्वास्त पहुंच जाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन 33 श्रीमती त्रिंगलामू। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे राज्य पूरे इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर राज्य में से एक है, लेकिन और इस केसेस को जितने भी सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स उनको हमारे राज्य सरकार फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सरकार के पास एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी ऑन HPN नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, व्हाट आर द अदर मेजर्स टेकन बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हमारे जो राज्य में स्टेट में सर्वाइकल कैंसर की रिपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर है, सर्विस कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर। तो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू काइंडली अप्राइज द हाउस वेदर द गवर्नमेंट इज going to develop more cervix cancer screening center in the state. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker, sir. ये जो क्वेश्चन नंबर 33 का जो क्वेश्चन है, ये अरुणाचल प्रदेश में रियली खास करके सर्विकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। दोनों डिस्ट्रिक्ट में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को हम जैसे मैडम ने कहा हम लोग कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल भी, लेकिन इसमें हम लोग जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए, तो सर्विकल कैंसर को हम 2 डोज से कंट्रोल कर सकता है। 9 साल से लेकर 14 साल 14 साल तक उसको हम 2 डोज वैक्सीन देने से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकता है। उसको मैं अपना कंस्टिट्यूंसी में उसको ट्राई किया है, कोशिश भी किया है, सारा MLA भी उसको अपना तरफ से कर सकता है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कनाडा है, USA है, जर्मनी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, वो सब में इम्यूनाइजेशन करके इन लोग वैक्सीनेशन देता है 2 डोज। और हमारा इंडिया में भी कुछ स्टेट जो जैसा सिक्किम जैसा, मणिपुर जैसा और केरला जैसा 4-5 डिस्ट्रिक्ट स्टेट अपना से ये पाइने से ये करके इन लोग 2 डोज स्टूडेंट को दिया जाता है 4 एज फ्रॉम 4 to 9 to 14 उसको कंट्रोल कर सकता है। तो अभी तक हमारे यहाँ में ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं सर्विकल कैंसर में बहुत पहले से मैं कोशिश किया है, जब MLA आने का बाद में दिया है वो अपना MLA ले से, तो वो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं अपने से। तो गवर्नमेंट का तरफ से जब इम्यूनाइजेशन जो टेक्निकल जो सेंटर से है उसका तहत हम लोग उसी का मुताबिक कर रहे हैं। तो अभी जितना भी इम्यूनाइजेशन कर रहा है उसी मुताबिक कर रहे हैं। तो इस सर्विकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन भी हम लोग वो प्रोग्राम में एडॉप्ट करने से हमारा स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ऊपर में हम गवर्नमेंट से आने से कुछ हमारा रिसोर्स होने से हम लोग वो भी हम लोग कर सकते हैं। रियली पापुमपारे हमारा नेशन का नंबर 1 में है, हमारा ये भी 3rd में है, ये 4th नंबर में है हमारा पासीघाट भी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके लिए हम लोग जो कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपना डिपार्टमेंट से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अदर जो कैंसर जो है उसको स्क्रीनिंग के लिए हम लोग लास्ट मंथ में भी हम लोग 2-3 जो व्हीकल हम लोग जो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग भेज दिया या से फ्लैग ऑफ किया है वो भी अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टेट में
रियली अलार्मिंग सिचुएशन है जो कैंसर सिचुएशन, उसको हम लोग अभी काबू में लाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। थैंक यू सर। Start question 35, Sri Wangling Longnong. Speaker, sir, must I question number 35? In regard to the Mission Shiksha, my supplementary is only this, that to inculcate proper learning and also to facilitate the students to have more interest in learning and knowledge, proper infrastructure and care should be given to the schools that they are taught. Most of the schools in the state are in a very awkward position. The results, we all know, are for everyone to see. So my question is that, what is the modus of the selection of the Mission Shiksha schools? 25 IV schools have been allocated for the state and also model schools. Now in my constituency, 2 schools had been selected under the Mission Shiksha. One for Bodria High Secondary School as a model school, and as an IV school, UPS Paniduria. In the case of Paniduria, whereas other schools, as per the allocation, substantial amount was allocated, sanctioned or approved for the various other schools of the state, whereas in my constituency in Paniduria, only an amount of 50 lakhs was sanctioned. So the 50 lakhs cannot substantiate the importance of the infrastructure that needs to be constructed and many other things that go beside the building of the other infrastructure that may be involved. My further question is, and again I repeat, what is the modus of the selection of this approval of schemes under Mission Shiksha and granting of allocation of funds from the west to the east? Why can't it be done in a more, in a pan sort of way, Arunachal way? Why selectively from the west to the east? Last assembly session also, I had asked this question. So if it takes, it goes along from one corner to the other corner, by the time it reaches the sunrise, from the sunset to the sunrise, that is in Tirap and Changlang and Longding, so it will take another 20 years with the amount of fund that has been allocated. Now, whether the Education Department, and to be precise, the Honorable Minister of Education, is taking steps to get further sanction from the Government of India, so that in parity with all the schools, they get simultaneously allocated of the funds that are necessary for the construction of the IV schools and also the model schools. And election is here, so I think it will be better if it's done within this year. Thank you, sir. Honorable Minister. Mr. Speaker, sir, start question number 35, Honorable member has asked supplementary. Sir, मिशन शिक्षा में हमने 25 स्कूल को आइडेंटिफाई किया था IV स्कूल की तरफ से, और अभी मैंने ने पूछा कि किस ढंग से इसको सेलेक्ट किया है। जितना भी जो 25 डिस्ट्रिक्ट से जो स्कूल सिलेक्शन हुआ, उसको प्रॉपर DC और DDSE के हर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करके इधर हमारे पास में आया है और उसको हम लोग को मान्यता दिया है। और इसमें 25 को हम एक साथ में हम टेकअप नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिसोर्स कॉन्स्ट्रेन है। टोटल हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट है 147 करोड़, तो हमें सर पर ईयर में 10 करोड़ मिला, तो इसलिए हम लोग ने सर सिर्फ 8 स्कूल को टेकअप किया। और अभी बैलेंस स्कूल को हमने सब्सिक्वेंटली इस साल भी हमने डिमांड दिया बजट को, अगर बजट पैसा हमें मिल जाएगा तो सब्सिक्वेंटली जितना भी स्कूल को हम लोग पेज वाइज में शुरू करेंगे। और रहा सर मॉडल स्कूल की, जो मॉडल स्कूल की भी सिलेक्शंस
थ्रू डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हुआ है करके उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग भेजा है, उसे अप्रूवल होकर आया है और अभी वो सेंक्शनिंग पोस्ट स्टेज में है। जैसे सेंक्शन हो जाएगा उसको हम लोग कम्युनिकेट किया जाएगा और होपफुली बाय अक्टूबर तक ये सेंक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर। देखो ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन जो फेजिंग का क्राइटेरिया को पूछा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर पेजिंग का सर हमने सर कहा कि रिसोर्स जो हमें जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 147 करोड़, तो हमें सिर्फ 10 करोड़ मिला, तो 10 करोड़ का हमको सिर्फ लिमिटेड स्कूल को टेकअप करना था, इसलिए हमने 8 स्कूल आइधर ईस्टर्न सेक्टर से शुरू कीजिए या वेस्टर्न सेक्टर से शुरू करें। कई एन से तो हमें शुरू करना है, तो हमने वेस्टर्न सेक्टर से शुरू किया है, तवांग से लेकर इस तरफ से जा रहा है, तो इसमें से कोई डिस्पेरिटी या कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है। अगर हमारे अभी जो 147 करोड़ और भी रिसोर्स हमें आ जाएगा तो बाकी स्कूल भी हम टेकअप करेंगे सर। So it's west to east. सर Why should there be disparity? It should be on need base. Arunachal has one. We talk of pan Arunachal. Why selectively from the west to the east? Why not from the east to the west? I don't say east to west. It should be selectively. No, honourable member, there has to be a criteria. The honourable member has said it has been done from west to east. है ना, तो कहीं ना कहीं criteria तो करना पड़ेगा. Now, what I'm saying is with the amount of fund that has been allocated, it will take about 20 years to reach this place. That's what I'm saying. So, I mean, ऑनरेबल how to make it in a faster space. स्पीकर सर ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें प्लानिंग से पैसा मिलेगा तो सब स्कूल ही हम टेकअप कर सकते हैं। अगर हमें इस बार अगर हमको 100 करोड़ मिल जाता तो हम सबको टेकअप करेंगे, इसमें कोई डिस्पेरिटी नहीं है। सब हमारे लिए सब अरुणाचल पेन अरुणाचल है सर। आप सेंटर से स्टार्ट कीजिए, हमारा जल्दी मिल जाएगा। सर जरूर देंगे सर। और सर उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि पानी दुरिया में 50 लाख सिर्फ सैंक्शन किया बोल के। नहीं, इनिशियली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया था उनके पानी दुरिया का सर 50 लाख था, लेकिन उसको जब दोबारा रिवाइज करके अभी डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट किया सबमिट किया है वो 4 करोड़ 83 लाख का है, तो इसलिए वो पानी दुरिया के भी जो 50 लाख ऑनरेबल मेंबर ने कहा वो नहीं है, 4 करोड़ 83 लाख का उसका डीपीआर सर आया हुआ है सर। Speaker sir, I have a supplementary here. The primary question was issue concern is that we have selected 25 villages, 25 schools of Arunachal Pradesh for the Mission Shiksha, but only 8 have been selected. It's not about question of east or west, west or east, but it's very important that we have to set certain criteria. आपका क्राइटेरिया क्या है कि जिसका बेसिस में आपने इन 8 विलेजेस 8 स्कूल्स को आपने आइडेंटिफाई किया है, सेलेक्ट किया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो वी हैव सीन दैट वी हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट साइट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जस्ट रैंडमली, बट व्हाट वी हैव ऑलवेज फॉरगॉटन और ओवरलुक्ड इज द फैक्ट दैट द क्राइटेरिया क्या है, दैन दूसरा बात है नीड बेस्ड क्या है। And on the top of that, the most important thing is this: when we try to land a development project, it's very important that we must have land, identified land, and we also must ensure that those lands are properly secured. And this normally we tend to forget and we tend to neglect. तो मेरा यही है क्वेश्चन है, फिर वही दोहराऊंगा कि normally not only education department, but the honorable minister, with regards to the honorable minister, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कहीं सेंट्रल से कहीं से, ये सब प्रैक्टिस साइट बंद करने से ठीक रहेगा। आप हमेशा आप उस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, उसका बेसिस पे आप उसको लर्निंग कराने की कोशिश कीजिए। देन सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट नीड बेस्ड पे करना चाहिए। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अरुणाचल प्रदेश में इट्स वेरी नॉर्मली इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आपका जो भी प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, लेकिन आपका उस जगह पे सचमुच में वो जगह है कि नहीं है, properly secured है कि नहीं। So this should be be the criteria for what to call ensuring that these projects are implemented. Ultimately क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, जब शुरू हो जाता है, शुरू होने के बाद ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, देन अल्टीमेटली हमारा जो फ्लैगशिप मिशन हो, जो भी हो, वो फेल हो जाता है। सो आई वुड थ्रो यू ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वुड रिक्वेस्ट दिस हाउस, आई वुड लाइक टू make this plea that we must ensure that criteria is rightly placed, it is thoroughly followed. Otherwise, not only in education department, in all other departments also, we have this practice actually. पिछले बार भी मैंने कई बार मैंने असेंबली में रेज किया था कुछ इसी प्रकार का इशू। तो we must know how to identify और क्राइटेरिया सेट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली आपका जितना भी आपका जो इनिशिएटिव, जितना भी आपका जो मिशन
अच्छा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब लैंडिंग कराता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज पे आ जाता है, तब बहुत ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एंड दैट्स अल्टीमेटली वो फेलियर हो जाता है प्रोजेक्ट। जो हमारा मिशन आपका एक इतना नेक मिशन है, कितना इंपॉर्टेंट एक एजेंडा लेके आया है, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो वो क्राइटेरिया को एकदम सही करके उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करें, नहीं तो कहीं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा ये सब चलता रहा है। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू स्पीकर सर। That's a suggestion, I think. सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सजेशन दिया हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। Start question 26, Shri Gokar Basar. For giving me chance. सर, मेरा सवाल था सर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक मेरा दारू सर्कल पे एक तंजकपुर का हैबिटेशन को लेके मेरा सवाल था। तो यहाँ पे दिया गया है कि वो एक हैबिटेशन विलेज में उसको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन सर मेरा मेन मोटो वही था कि वो तंजकपुर जो है वहाँ पे सिर्फ 2 हाउस होल्ड है, और उसके बाद जो अभी एक सड़क जो है, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने पूछा, तो मैं इस गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जिस तरह मेरा लफारादा में रोड कम्युनिकेशन का ऊपर काम किया। काफ़ी तारीफ करने के लायक मेरा इस टेन्योर में बहुत सा PMJSY, चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड प्लान भी बोलिए, जितना हो सर बहुत काम किया, लेकिन और अभी एप्रिसिएशन भी 100% अचीव हुआ PMJSY में और हर डेवलपमेंट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वही है कि हर क्षेत्र में काम अच्छा करने के बाद मेरा भी एक डाउट था इसी बस्ती को लेके सर। इसको जो 2019-20 में एक PMJSY रिलू टू इगोरी जो बोल के सर एक सेंक्शन किया था 3 करोड़ अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ सर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा बिना नॉलेज में सर आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट लफारादा, लेकिन एक जो है रास्ता सड़क बना रहा था, तो मैं कभी मुझे वहाँ का कंसर्न एजेंसी ने नहीं बताया और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं आया, तो ठीक है, लेकिन मेरा एरिया में सड़क बना तो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 करोड़ में सर, तो फॉर्चुनेटली 3 करोड़ में तो अच्छा सड़क बनाया PMJSY ने, लेकिन 5 करोड़ में अभी सुनने में आया कि मैं खुद वो रास्ता से भी जा सर वो मोटरेबल भी नहीं है। और उसके बाद मेरा उस दारू सर्कल में अभी तक 2 विलेज जो है रोड कम्युनिकेशन अभी ऑल वेदर रोड नहीं है, लेकिन जिस बस्ती में हम PMJSY एक रास्ता दिया, सड़क दिया, उसी बस्ती को और दोबारा इसमें SIDF में सर दिया गया, तो इसमें डिस्करेज हो जाता है। अभी 2 विलेज को अभी तक कवरेज नहीं किया, लेकिन इसमें और अनदर एक बैक टू बैक 2019-20 में PMJSY 2021 पे एक इसमें सर कंप्लीट दिखाया गया है, अमाउंट तो नहीं दिया, लेकिन ये जो है सर अभी मोटरेबल नहीं है वो सड़क। तो इसीलिए मैं ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि अभी जो बाकी 2 बस्ती ऑल वेदर रोड कनेक्शन नहीं है उसको गवर्नमेंट नहीं दे रहा है डिस्पाइट ऑफ अपील करने के बाद भी, लेकिन सर एक ही बस्ती में मेरा नॉलेज में एक सड़क जरूर दिया और बिना मेरा नॉलेज में भी एक सड़क दिया गया। तो इस तरह सर जब इतना सुंदर से काम हो रहा है तो 1-2 गलतियां का वजह से वहाँ पे पब्लिक को भी डिस्करेज हो जाता है और डिपार्टमेंट को भी डिस्करेज हो जाता है। तो इसीलिए सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं पड़ता है कि स्पेशली ये सर RWD पे दोबारा जाता है सड़क का ऊपर लेके। ऐसे लपारादा सर मेरा रोड कम्युनिकेशन का ऊपर कंप्लेन नहीं है, बहुत स्कीम्स आरआई दिए बोलिए PMJSY, तो अभी भी और अनदर 2 बस्ती को जहाँ ऑल वेदर रोड नहीं है वहाँ पे इस बार भी 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बस्ती पे फंड जो है सर मिसयूज हुआ है। तो इसको अगर इसको कंप्लीटेड सर जो दिखाया है तो इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 5 करोड़ में तो ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए, जहाँ 3 करोड़ पे दूसरा एंगल से, और वो भी हाईवे से, दोनों एक ही बस्ती को हाईवे भी वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक ही विलेज में 2 सड़क बैक टू बैक 2 फाइनेंशियल में बना रहा है सर। मेरा हिसाब से ये मिसयूज ऑफ फंड है। तो मैं भी अपना पब्लिक को जवाब इस 5 साल का कार्य का तुम्हें सर जवाबदार तो मैं हूँ, तो इस सदन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस सड़क को कैसे सर इस बैक टू बैक 2 साल में बनाए। तो ये जो है सर मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही रहेगा सर, अभी दोबारा जो 2 बस्ती जो रह गया ऑल वेदर नहीं है उसको भी सर मैं क्या जवाब दूँ उस बस्ती को, और जहाँ पे एक ही बस्ती पे 2 सड़क दिया गया है इसको मैं पब्लिक को क्या जवाब दूँ सर, वो आपका माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ सर। थैंक यू। मंत्री जी,
मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल मेंबर श्री गोकर भाई ने जो पूछा है, एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को आया है रिगार्डिंग तन्याकपुर विलेज के बारे में, लेकिन घूम फिर के फिर उनका ये क्वेश्चन जो है फिर रोड सेक्टर में शिफ्ट हो गया और इन गोकर जी से पता चल रहा है कि शायद मे बी आई थिंक आप शायद डुप्लीकेसी का बात कर रहे हैं वहाँ पे रोड्स का। डुप्लीकेसी ने पैरेलल रोड बन गया बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हिम। तो एनीवे मैं आपके माध्यम से श्री गोकर को बोलना चाहेगा कि जो इशू यहाँ पे आपने जो मैटर रेज किया है वो कंसर्न डिपार्टमेंट मंत्री जी का साथ में बैठ के आप एक लिखित में उनको दे दीजिए ताकि डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करके फिर आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और साथ में ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से जितने भी जो ऑनरेबल मेंबर्स है सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं उस चुनाव क्षेत्र से, तो जहाँ भी इस प्रकार का कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत मंत्री जी के साथ में बैठकर रिटर्न में उसको दे दीजिए, कंप्लेन भी हो, क्योंकि इस तरह से डुप्लीकेसी या फॉल्स जो काम जो अगर होता तो नहीं है मेरा हिसाब से, अगर होता भी है तो ये गलत है। तो इस प्रकार से अगर होने से डायरेक्ट कंसर्न मिनिस्टर के साथ बैठिए और हम लोग जो भी कार्रवाई है उसको हम लोग शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्री वांगलिंग लोंगडोंग। Your microphone. Put on your microphone. Speaker, sir, thank you. My question is on the job reservation for the district under the APSSB rules. I understand and remember that in the last, not the last sessions, in the previous sessions, the government had assured and claimed on the floor of the House that a district quota as per applicable will be only eligible for those who are bona fide from that particular district. Now, in the present status of the APSSB's jobs that has been advertised, wherein that specific quota for the districts is still prevalent or not? And if so, why not? Because we have seen, especially in Group C and D posts, I'm not against uniformity or meritocracy as such, but then, as far as the districts are concerned, representatives for that particular districts are also most important, particularly in Group C and D posts. People coming from other districts to serve in a particular district, in group as a peon or as a chokidar or something like that, in Group C or D posts, they hardly stay there. Not only this, I've seen in the present situation, even the TGT and PGT teachers in my district, we have got a shortage of more than 100 TGT, PGT teachers, because most of them come from the other districts. After staying a few months, they go back to their own places. That is a trend. It's a naked fact of what the situation is in our state. We have to agree to that. Now, at least as part this Group C and D posts in the district administration, besides engineering and forests, I think all the other departments should have that specific quota. If there is no ordinance or notification, why isn't the government issuing a notification or an ordinance to proclaim this district quota-wise? Thank you. Honourable Minister. Honourable Speaker, sir, the supplementary question which is raised by Shri Wangling Loangdong ji regarding district quota, इसमें ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं इस हाउस को बताना चाहेगा कि हम लोग ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हम लोग ने गठन किया
और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने से पहले अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ इस तरह सा साधन नहीं था, कोई अच्छा पॉलिसी या कुछ अच्छा एक मैकेनिज्म नहीं था, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। सो हम सब लोग जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से जितने भी जो गवर्नमेंट का खास करके ग्रुप सी और डी का जो बात करते हैं, तो किस प्रकार से रिक्रूटमेंट ये हुआ करता था, तो उसको देखते हुए हम लोग ने कंसर्न रेज किया कि इट शुड बी एज पर मेरिट, और उसीलिए हम लोग ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हम लोग ने गठन किया है। और अरुणाचल का जो यूनिकनेस है, क्योंकि जोग्राफिकली भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स भी यहाँ पे बसे हुए हैं, तो उनको अपना एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी हम लोग ने इसी सदन से हम लोग ने पास किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोटा भी हम लोग उसमें प्रोविजंस हम लोग देंगे। मगर अभी लास्ट ईयर इस डिस्ट्रिक्ट कोटा को लेके एक तो मैटर को कोर्ट में लेके चला गया, तो अभी मैटर जो है कोर्ट में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोटा को चैलेंज करते हुए। तो कोर्ट में अभी फ़िलहाल ये सब जुडिस है मैटर। मगर मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप बताना चाहेंगे कि देखिए अभी अगर हम लोग आर्टिकल 16(4) का ऊपर में अगर हम लोग जाएगा 16(4), तो उसमें एक्चुअली जो रिजर्वेशन होता है केवल सिर्फ 50% होता है, लेकिन अपना स्टेट में हम लोग ने 80% रखा हुआ है। तो आई थिंक क्योंकि अरुणाचल ऐसे होल 100% हम लोग का ST ये शेड्यूल ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं हम लोग, तो आई थिंक इस मैटर को ज़्यादा हम लोग हाउस में चर्चा करते हुए फिर कोर्ट का नज़र पड़ जाएगा, फिर ये आर्टिकल अगर लगा देगा तो हम लोग का 80% भी हम लोग का हाथ से चला जाएगा फिर। एनीवे वी आर वेरी मच सीरियस एंड लुकिंग इनटू द मैटर। वैसे केस तो थोड़ा सा हम लोग का वीक ज़रूर है, लेकिन तो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोटा को हम लोग मेंटेन करने के लिए। और उस केस का कारण से अभी हम लोग का कुल मिला के 710 डिस्ट्रिक्ट कोटा का वैकेंसीज अभी भी पड़ा हुआ है, उसको एडवर्टीजमेंट कर नहीं पा रहा है क्योंकि मैटर इज लाइंग इन दी गुवाहाटी हाई कोर्ट नाहरलगुन बेंच। थैंक यू स्पीकर सर। Start question 20. Speaker, sir, sir, I have one supplementary. Supplementary, sir. Honorable Speaker, sir, ये जो एक हो गया जो डिस्ट्रिक्ट कोटास को लेके अभी जो चर्चा कर रहे हैं, दूसरा इशू ये है सर कि यहाँ पे अरुणाचल में हमारा जो भी है अभी जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला जो APSSB के थ्रू मतलब रिक्रूटमेंट जो सिस्टम जो लाया है, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पहले से हो जाना चाहिए था, अभी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता यह है कि यहाँ से नॉर्मली ईटानगर में रिक्रूटमेंट होता है, सारा अरुणाचल में रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टाफ का, मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से इनका रिक्वायरमेंट्स जो है दे देता है, अकॉर्डिंगली यहाँ में रिक्रूटमेंट होता है। होने के बाद क्या होता है, इनको जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है डिस्ट्रिक्ट्स में इनको भेज देते हैं। भेजने के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट से आस्ते आस्ते एक एक करके मतलब चोरी करके वो पोस्टिंग करके सारा फिर ईटानगर में इकट्ठा कर देता है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य जो है, जो एक्चुअल जो भी ये था कि सारा डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए इनका रिक्रूटमेंट हुआ था, लेकिन वो नहीं करके फिर आस्ते आस्ते एक एक करके मतलब वो रिकमेंडेशन करा करके फिर ईटानगर में इकट्ठा कर देता है। तो हमारा जो एक्चुअल जो मिशन जो है, जो जिसका बेसिस पे हमने इनको रिक्रूटमेंट किया था, वो मिशन फेल हो जाता है। ये प्रैक्टिस हमेशा रहा है। तो लिहाजा मैं इस सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या हम एक मैकेनिज्म रख सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि इस प्रकार का प्रैक्टिस ना हो। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक सिचुएशन फेस किया है। पिछले बार वो क्या बोलता है, वो कोरोना का नाम से सारा हमारा जो भी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जितना भी स्टाफ का जो जितना भी है रिक्रूटमेंट हुआ था, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ का, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट्स का रिक्वायरमेंट्स हिसाब से हुआ था। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो भी है एक दो करके वो पता नहीं चलता है, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन ज़्यादा अमाउंट जब जगह फिगर बराज हो जाता है तब वो शुरू हो जाता है सफरिंग, तो उसमें पता चल जाता है। तो ऐसे करके उनको फिर ईटानगर लेके आया, जहाँ तहाँ ये कर दिया। देन अल्टीमेटली देखा कि वहाँ से फिर वो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर्स का जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फिर रूरल रिमोट एरिया से वो ट्रांसफर पोस्टिंग करना शुरू होता है। तो हमारा जो मिशन जो है कि हमारा जो गाँव तक जो हमारा जो भी पब्लिक तक जो हमें जो सर्विस डिलीवरी करने के लिए जो इरादा रखा था वो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम एक मैकेनिज्म रख सकते हैं कि नहीं, एक मैकेनिज्म क्या हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कौन सा समय, क्या हम निर्धारित समय पे क्या हम इसको हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ताकि हमारा जो जिस मिशन से हमने जो रिक्रूटमेंट किया है, जिस मिशन के साथ हमने जो स्टाफ को हमने पोस्टिंग किया है वो फुलफिल होने के लिए। थैंक यू स्पीकर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर,
जो श्री गैब्रियल डी वांसू का जो सप्लीमेंट क्वेश्चन है, मैंने जैसे मेंशन किया कि ये डिस्ट्रिक्ट कोटा को लेके अभी मैटर इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी नाहरलगुन बेंच। तो अभी उस फैसला क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर जजमेंट फेवर में आता है तो डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोटा में जैसे मैंने कहा है कि 700 समथिंग पोस्ट अभी भी एडवर्टीजमेंट करना बाकी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोटा होगा तो वो ट्रांसफरेबल तो होगा नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट में ही बैठना पड़ेगा। अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोटा में एज सच स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जनरली जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक जो रिक्रूटमेंट किया है कुल मिला के 1462 वेरियस पोस्ट को अभी तक रिक्रूटमेंट करके उन लोगों को अपना अपना पोस्टिंग प्लेस में भी भेज दिया है। तो ये लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोटा नहीं है, जिनका अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से जिनका रिक्रूटमेंट होकर जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोटा में वो लोग नहीं आता है। तो शायद किसी डिपार्टमेंट्स का होगा, तो डिपार्टमेंट्स का तो अपना बीच में शफल भी चलता है। तो मेन डिपेंड करेगा कि अभी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, उसके ऊपर देख के हम लोग फिर उसको रिविजिट करेंगे। थैंक यू सर। वन सप्लीमेंट सर प्लीज सर। थैंक यू सर। सर जैसे कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोटा वाला है सर ये मैटर इस सब जुडिस सर। तो सर मैं सर चूँकि हमारा सरकार सर पेमा खांडू सरकार सर जनता को बहुत सर प्यार करता है सर, एंड बहुत लोकप्रिय भी है सर वाकई में सर। पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसा सरकार है सर वाकई में लोगों को प्यार करता है, राज्य को प्यार करता है सर। तो सर मैं चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद कहा कि ये मैटर जो सब जुडिस है सर, तो मेरा सर एक निवेदन रहेगा सर, इफ पॉसिबल सर, चूँकि जब भी सर कोर्ट में विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सर ऑनरेबल कोर्ट सर, हो सकता है सर ये जब कोर्ट में लग गया तो सर ये 5 साल खींच सकता है सर जजमेंट आने के लिए। हो सकता है सर अगर वहाँ हम जीत भी गए तो सर फिर लोग सर हायर कोर्ट में चला जाएंगे सर, तो दिस माइट सर पुल अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर। तो सर इज इट पॉसिबल सर एज सर जैसे 700 पोस्ट बोला सर, क्योंकि 700 लोगों को कमी रहेगा सर सारे सर ऑफिस में सर, इसको सर हम लोग जो 700 पोस्ट इसको सर हम लोग सर कॉन्ट्रेक्चुअल में हम लोग सर दे पाएगा क्या सर, ताकि हमारा जितने भी जो ऑफिस है सर वो अपना ढंग से वो काम कर सके सर। मेरा सप्लीमेंट ये है सर। थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो कंसर्न जो रेज किया है, हमें नहीं लगता कि जजमेंट प्रोनाउंस करने में उतना टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अर्जेंट मैटर है। और जहाँ तक कॉन्ट्रेक्चुअल का जो बात है, आई थिंक वी शुड नॉट एनकरेज अनटिल एंड अनलेस कुछ इमरजेंसी जब तक नहीं होता है। अभी आज अरुणाचल प्रदेश में देखिए अपना जितना भी जो डिपार्टमेंट है सबको रेगुलर जॉब डिमांड करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल में घुसा है। अभी उस कॉन्ट्रेक्चुअल का माध्यम किस हिसाब से घुसा है, उसमें कुछ रिटन एग्जाम हुआ ना कुछ इंटरव्यू हुआ, कुछ भी सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। आप बोलते हैं कि 10-12 साल पहले हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आ गए, अभी मेरा एज पार हो गया, आई कांट फेस द एग्जाम, अभी हमको रेगुलर करो। सो इस तरह का दैट बैड प्रैक्टिस हम लोग अभी उस जमाने में चलो जो हो गया, लेकिन अभी ये सब आदत को हम लोगों को छोड़ना चाहिए। आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव जजमेंट हो जल्दी प्रोनाउंस करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन। I appreciate the concern of the Honorable Chief Minister, but if this is the case, and as per the opinion of the various speakers, because it is affecting the functioning of governance in various departments, as the court proceedings may take longer time. But this August House can always bring clear the situation by bringing in a bill on district quota. It can be done. Karnataka and Maharashtra also have district-wise quota. Besides having the 80% reservation, region-wise, district-wise. So in that case, we also, 80% is reserved for the tribals. That's okay. But along with that, even other states also have this district-wise and region-wise quota. So I think if the government wants it, they can bring a bill, and the House is always there to clear it, make it district-wide quota, because there was no mention of district-wide quota. Only that the status that was applicable in the 1990s, we are going along with that.
No specific mention or no specific ruling, notification was ever adopted. Only district-wise quota. I mean, so we have to have a particular set of rules framed, and also, if necessary, a bill to be placed in this August House for clearance. The Honorable Chief Minister already said that the matter is sub judice. So once the matter is sub judice, I don't know what the legal opinion. We cannot take up any matter which is in the court. Opinion can always be taken from the learned Opinion, justice. you're talking about bill. Yeah, anyway, Honorable Speaker, sir, this is a good suggestion. We have noted it down. Thank you. Next, start question 20, Sri Lambo time. I am fully satisfied with the reply furnished. So, start question 34, Sri Wangling Wangdong. Thank you, Speaker, sir. I think you have a liking for me, making me ask so many questions. Thank you. My question is, in regard to the creation of CD block, my constituency, there is a circle known as Longo, which is one of the remote areas covering about 13 to 14 villages. A forwarding was sent by the district administration of Tirap district for the creation of the CD block at Longo circle. Now I understand that about 15 new CD blocks have been created, whereas that Longo circle forwarded for the creation of the CD block was missing. So what is the reason? Is the government going to take up steps to include this as a CD block also? Thank you. Honorable Speaker, sir, answers to the STAIR question number 34, raised by Honorable Member Sri Wani Luangdong, A, B, C, D, E is laid on the table of the House. But, Honorable Speaker, sir, I want to convey the Honorable Member. Yes, we had created, the government have created 15 new CD blocks last year. But unfortunately, the proposal for Longo CD block we received 26 days later. The proposal already moved for the cabinet decision. And now, in line with your new proposal, we have another total 5 new CD blocks has been proposed, and we are going to move it. And now we are a little bit delaying because from 2 CD blocks, the proposal from Lower Dibang Valley, 2 CD block Mekka, Santipur, and Anpum, Paglam, the documents are incomplete, and we are writing to the concerned DC to immediately send the complete documents so that we send the proposals for the cabinet decision. Thank you. Is there any assurance as for the Honourable Speaker? Are you giving an assurance that this CD block will be created? Honourable Minister. Honourable Minister. Honourable Member is seeking assurance. Yeah, creation is not in the department's authority. It is the cabinet that will, but I'm assuring you that the department is proposing to the Honourable Cabinet. You got the assurance that from department they will propose. No, but my questions was, in spite of the fact that the Deputy Commissioner had forwarded. No, that he had already replied. That he had already, they have received the proposal late. Now he has given assurance from the department side, they will propose it. No, it was very much punctual in its forward thing. I don't know how it was. If you could read the answers of C and D, the 15th proposal was moved for cabinet decision on 4/8/2022.
And the proposal for Longo, we received from the DC 30th/8/2022, that is 26 days later, we already proposed the 15 proposals. So next, when we propose, you will be, I think, the number one. Don't worry. Okay, thank you. The question hour is over. Now, Sri Lambotaying may raise the matter regarding Siang flood to be declared as a national calamity. Speaker sir, thank you very much. Taking the advantage of the 0-hour discussion, I am taking off the matters regarding the declaration of Siang river flood and erosion problem as a national calamities. Sir, the constant and massive land erosion of Siang river floodwater is a great concern. The river course is frequently changing, thus causes massive land erosion to the tune of few lakhs. Sir, I repeat, to the tune of few lakhs of cultivated land and very fertile cultivable land, and also the standing houses and buildings, standing crops and plants, etc. at Mebo subdivision in East Siang district. Sir, one of the famous wildlife sanctuary of the state, the D. Iring Memorial Wildlife Sanctuary, the area of this sanctuary is also reduced down to a considerable measure due to constant bank erosion. The peoples of Mebo subdivision in particular and East Siang district in general are rendered homeless and landless, and even the other government establishment too in the area. Therefore, sir, through you, I would like to urge upon the state government of Arunachal Pradesh to take up this issue with the government of India to declare the Siang flood and erosion problem as a national calamities at the earliest. Sir, since there is possible involvement of Chinese government in blocking, diverting, ponding, and dumping of constructional debris materials and releasing of ponding water unwarrantedly at upstream at their territory, as the nature and behavior of the water is unpredictable during lean winter season also. This is experienced since 2000, popularly known as China flood. If this is not declared as national calamities and adequate measures are not taken, then it may be disastrous in near future. Therefore, I once again urge upon the government through you, sir, that the matter be taken up with government of India for early declaration of the Siang flood and erosion problem as national calamities, as was in the cases of Assam flood, as was in the cases of Bihar, as was in the cases of Jammu and Kashmir flood problems. Government of India declared that as national calamities also. So it is also applicable in the state of Arunachal. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the 0-hour discussion brought by Honorable Member Shri Lambotaying ji regarding declaration of Siang flood as national disaster. इसमें ऑनरेबल स्पीकर साहब आपका माध्यम से मैं इस हाउस को बताना चाहेंगे जो एक्सिस्टिंग जो हमारा जो गाइडलाइंस है, चाहे वो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड जो SDRF के नाम से जाना जाते हैं, या तो दूसरा जो है NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, इन दोनों का और उसमें जो ये दोनों ब्रांच जो आता है अपना नेशनल कैलामिटी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में आता है 2005. तो इस एक्ट का मुताबिक भी देयर इज़ नो प्रोविजन एग्जीक्यूटिव और लीगल टू डिक्लेयर नेचुरल कैलामिटी एज नेशनल कैलामिटी. तो इसमें ये प्रोविजंस नहीं है.
लेकिन जब भी कहीं भी देश में किसी भी प्रकार का जो आपदा आता है या फ्लड सिचुएशन या जो भी इस तरह से डिज़ास्टर होता है, तो दिल्ली से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बना के कॉन्स्टिट्यूट करके अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो वो भेजते हैं। तो जो कंसर्न जो सियांग के ऊपर में जो ऑनरेबल मेंबर ने रेज किया है वो वाकई ही जेन्यून है। मैं भी बहुत दफ़ा वहाँ पे हम भी पर्सनली विज़िट किया, और हमें याद है कि एक सेंट्रल जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी आया था, मैं उनके साथ भी वहाँ मैं विज़िट किया था। तो वहाँ विज़िट करने का बाद हमारा स्टेट में कहीं जगह में वो लोग ने विज़िट किया, और हर एक एरिया का प्रपोज़ल, काफ़ी बड़ा प्रपोज़ल हम लोग ने यहाँ से सबमिट किया। मगर जो दिल्ली से जो फंड आया है काफ़ी उतना ज़्यादा फंड नहीं आया है, और एरिया स्पेसिफिक फंड नहीं आया है। लेकिन तो भी थोड़ा सा सियांग को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हुए हम लोग ने 35 करोड़ हम लोग ने वहाँ पे रिलीज़ करके दिया था। मगर ये 35 करोड़ का काम भी हो गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली सियांग में ज़्यादा पानी आने का कारण से वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। आई थिंक ऑनरेबल मेंबर आपको भी इस फैक्ट के बारे में पता है। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के स्पेशल सेक्रेटरी जो अभी ब्रह्मपुत्र बोर्ड के चेयरपर्सन भी है, रिसेंटली कल परसों यहाँ ईटानगर में आके ब्रह्मपुत्र बोर्ड का भी मीटिंग कंडक्ट हुआ था। तो उसमें भी ये सारा विषय को हम लोग ने डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे डिस्कस हम लोग किया था, और जब स्पेशल सेक्रेटरी मैडम ने जब कॉल ऑन किया है तो भी हम लोग ने इस मैटर को रेज किया, हम लोग ने डिस्कस किया। तो देखते हैं, हम लोग का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में लगातार टच में हम लोग ज़रूर है। तो वी विल ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि सियांग फ्लड को और भी फर्दर हम लोग एड्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर्स ने जो चाइनीज़ के जो उनका जो वहाँ पे जो हरकत चल रहा है उसके ऊपर भी मेंशन किया है यहाँ पे। ये बात तो सही है कि चाइना में जो काम चल रहा है, एज पर दी 14th 5-year प्लान जो चाइनीज़ का गवर्नमेंट का, वहाँ पे अप्रूव हो गया है कि हमारा जो सियांग जो तिब्बत में जो पड़ता है वहाँ पे वो लोग अराउंड 60,000 मेगावाट का डैम का प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाएंगे। तो उसी को चलते हुए भारत सरकार ने भी कंसर्न रेज किया कि फ्यूचर में अगर वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो अपना सियांग का स्थिति क्या होगा। अगर पूरा पानी अगर डाइवर्ट कर देता है तो सियांग तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसको तो हम लोग पैदल भी पार कर पाएगा। तो चलो कल में अगर जाके वहाँ से कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, वहाँ से पानी अगर ज़्यादा भी छोड़ के आ जाता है, तो फिर अपना सियांग बेल्ट और आसाम टिल बांग्लादेश वहाँ पे फ्लड जो होगा बहुत ही मैसिव फ्लड होगा। तो उसको किस प्रकार से हम लोगों को रोकना चाहिए, तो उसके ऊपर में काफ़ी चर्चा हुआ है। तो काफ़ी चर्चा हो के मैं खास करके सियांग एरिया में जाके वहाँ के जितने भी हमारा मेंबर्स है उनके साथ में भी मीटिंग हुआ, वहाँ के जो एपेक्स बॉडी है जो AB के उनके साथ भी हमारा मीटिंग हुआ। और मैंने कहा है कि भारत सरकार के ओर से सियांग को बचाने के लिए प्रस्ताव वो लोग कुछ रख रहे हैं, कुछ बड़ा एक बैरेज कैपेसिटी का एक बड़ा एक बैरेज वहाँ पे बनाना चाह रहा है, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का अगर कुछ इंसिडेंट अगर होता भी है, मान लीजिए अगर पानी डाइवर्ट भी हो जाता है, तो वह सियांग में बैरेज बन जाने का बाद में सियांग को हम लोग ताकि जिंदा रख सके। या तो दूसरा वे में अगर देखा जाए, अगर वहाँ से पानी वो लोग छोड़ भी देते हैं तो उस पानी को फ्लड से बचाने के लिए भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसको ऊपर में आई थिंक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हम लोगों को काम करना चाहिए। तो वैसे मैं कल ऑनरेबल मेंबर का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा रहा हूँ सोलुंग फेस्टिवल में, तो उसमें भी इस बात को फिर दोबारा हम वहाँ पे पब्लिकली भी हम रिट्रेट करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत सरकार ने जो ऑफर दिया हुआ है उसको ऊपर में विचार करके सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन शायद 1-2 जगह में अभी कुछ गाँव वाला ने रुका कर रखा हुआ है, उसको जब तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने नहीं देगा तो आपको रिजल्ट फिर हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो एक बार ड्रिलिंग करके 1-2 जगह में ड्रिलिंग का काम बाकी है बोल के बताया, तो उस ड्रिलिंग का काम एक बार हो जाने का बाद तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर कट पिक्चर हम लोगों को दे पाएगा। सो मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से हमारा जो ऑनरेबल मेंबर है लुमो तायंग जी और सियांग बेल्ट के जितने भी जो मेंबर्स हैं,
ये मैटर काफ़ी सीरियस है, इसलिए मैं बार बार इस मैटर को हम पब्लिकली भी हम हमेशा लोगों को बोलते हैं, इसको ऊपर हम लोग सीरियसली विचार करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस डिस्कशन को वाइंड अप करने के लिए मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपका माध्यम से फिर दोबारा मैं रिट्रेट करना चाहेगा कि सियांग का जो फ्लड सिचुएशन है हम लोग को पूरा जानकारी है, वहाँ पे किसी चीज़ से अभी डी रिंग वाइल्ड लाइफ के बारे में भी मेंशन किया, अभी काफ़ी वहाँ पे पानी से इरोड होके काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हो गया है। तो इसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा फंड चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार के पास में वो अभी फ़िलहाल कैपेसिटी नहीं है। तो वी विल टेक अप द मैटर अगेन एंड अगेन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू स्पीकर साहब। Honourable members, I have received a request from Sri Ninong Iring, Sri Karikokri, Sri Tapuk Taku, and Sri Tana Alitara for leave of absence, and I have allowed their leave. Now we will take up bills for consideration and passing. Sri Chonamian, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics, may move the motion for consideration of Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Any members willing to take part in the bill? I think there's no one. So now Sri Chonaman, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics may make a statement. Honorable Speaker, sir, GST, that is Goods and Service Tax, has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dreams of India as one market, one tax, as one market and one tax. GST revenue are buoyant despite the pandemic. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the challenges, but enthusiastically contributed to the cause by paying taxes. Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Act 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intrastate supply of goods or services or both by the government of Arunachal Pradesh. Similarly, the Goods and Service Tax Council on its 50th and 51st meeting considered representation from various associations on the issue regarding taxability of casinos, horse racing, and online gaming, and recommended to make certain amendment in the Central Goods and Service Tax 2017 and respective states acts to provide clarity regarding taxability of casinos, horse racing, and online gaming. All the sections of the present bill has been promulgated by Finance Act 2023 except section 2 and 24 and paragraph 6 of schedule 3 and transitory provision which were promulgated by amendment in the Central Goods and Service Tax Act 2017 on the basis of decision made by the Goods and Service Tax Council on its 50th and 51st meeting on the issue regarding taxability of casinos, horse racing, and online gaming. It is mandatory on our part to amend the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Act 2017 as done by the central government and other state government by enacting Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023.
The present bill has 26 clauses amending various sections of the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Act 2017, either for inserting some new provision, substituting some existing provision, or for omitting some provision. Certain changes have been made in the AP-GST Act on the basis of recommendation made by the GST Council. These changes will come into effect from 01/010/2023. These changes broadly relate to facilitation, simplification, and for improving compliance. Therefore, the present Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 has been laid on the floor of the House for passing. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it, the motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for the consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 26 do stand part of the bill. In favor may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it, the clause 2 to 26 stand part of the bill. Now the question is that the clause 1 enacting formula and the short title do stand part of the bill. In favor may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it. Clause 1, the enacting formula and the short title stand part of the bill. Now Sri Chandaman, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics may now move the motion for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 be passed. Question is that the bill be passed. In favor may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it, the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 is passed. Now the House will take up government resolution regarding the celebration on the historic success of the Chandrayaan-3 mission. Sri Honchun Gandham, Minister of Science and Technology, may move the resolution. Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing me to move the government resolution. Resolution is like this. The following resolution celebrating the historic success of the Chandrayaan-3 mission. Sir, we are proud to bring this government resolution to this August House for adaptation and support by the honorable members through you. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly proudly joins the nation in celebrating the historic success of Chandrayaan-3 mission to the moon and extend heartfelt appreciation to the dedicated scientists behind this monumental achievement, which not only marks a triumph for our space agency but also signifies Bharat's global progress and prominence. This assembly also welcomes designating 23rd August as National Space Day to commemorate this momentous occasion. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly commends the Indian Space Research Organization ISRO for its tireless efforts. Landing near the moon's south pole with precise accuracy is a remarkable feat in itself, showcasing the indomitable spirit of our scientists. The data collected by the Pragyan rover promises to advance knowledge and unlock mysteries on the moon's surface and beyond. In an area defined by the technological advancement and innovation, Bharat's scientists are beacons of knowledge, dedication, and expertise. Their commitment to inquiry and exploration has consistently propelled our nation to the forefront of global scientific achievements, inspiring countless others. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly takes pride in the substantial contribution of women scientists to Chandrayaan-3 success, which
undoubtedly motivate aspiring female scientists in years to come. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly extends congratulations to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his visionary leadership and unwavering support for Bharat's space program. His faith in our scientists and his encouragement has always bolstered their resolve. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly warmly welcomes the naming of two moon points, Tiranga Point, Chandrayaan-2 footprint, and Shiv Shakti Point, Chandrayaan-3's landing site, symbolizing our rich heritage and scientific aspirations. Chandrayaan-3's success aligns with Honorable Prime Minister's call for Jai Vigyan Jai Anusandhan. It expands opportunities for Bharat's startups, MSMEs, and job creation, while also promoting innovations. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly echoes Honorable Prime Minister, emphasized that knowledge gained from Chandrayaan-3 will benefit humanity, especially in the global south, exemplifying Bharat's beliefs in Vasudhaiva Kutumbakam, and Bharat's achievement in the space sector reflects progress, self-reliance, and global leadership, signifying the rise of New Bharat. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly is sanguine that in this era of science and technology, this feat will inspire more youngsters towards scientific pursuits and offer a unique opportunity to ignite interest in their fields. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly congratulates and appreciates every individual who contributed to the resounding success of historic mission. Chandrayaan-3 is a testament to Bharat's immense potential, its determination, and its perseverance. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our nation and our state are brimming with joy and pride. And today we rededicate ourselves to building a Vikasit Bharat and a Vikasit Arunachal by 2047. So I would like to request honorable members through you to support and adopt this government's resolution. Thank you. Any member willing to speak on the resolution may do so. I think there's no one, so Yes, sir. please. Honorable Speaker, sir, thank you for giving us this time. This is a great day that the resolution is placed before the Saga's house. Even we celebrate and are happy when a child is born in our family, or even a little success that we achieve. But this is a great achievement of the country, and I stand here to support this resolution. Yes, we are really thankful to our scientists, the ISRO's members, and our Honorable Prime Minister Narendra Modi for his great and big vision. I think India is the only country that has sent the Chandrayaan and landed successfully in the moon in the southern part. So we are really grateful to our scientists and to our government under Narendra Modi ji that we should be really celebrating this day of 23rd August and the day celebrated as a space day. We will remember this in generations to come. This will be a great history, the success story of India's and India's scientists. I congratulate the scientists, the ISROs, the members, those who have taken pain, use their brains to achieve this mission.
With this, I would once again congratulate the people of India under the leadership of Narendra Modi ji, and wish that more achievement in the sector, even in space, not only in the land, but in a space, and we will move ahead and achieve more and more. Thank you, sir. Any more members willing to take part? I think there's no more members, so I'll put the resolution to vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The resolution is adopted. Honourable members, I would like to inform the House that there is no more business for today, and for tomorrow also there are some few questions to be transacted in tomorrow's sitting. Moreover, some of the members who raised the questions have also applied for leave of absence, so there will be no sitting tomorrow. However, the replies of start questions and unstart questions will be sent to the concerned members. Before the House is adjourned, I would like to thank Honourable Chief Minister, Honourable Deputy Chief Minister, Honourable Ministers, Honourable Members, Chief Secretary, Commissioners, Secretaries of Government of Arunachal Pradesh, Department of Parliamentary Affairs, Media, the Police Department, officers and officials of Legislative Assembly Secretariat, and all who have contributed directly or indirectly for the smooth conduct of the session. It is my pleasure to announce that a lunch has been hosted at the banquet hall of Legislative Assembly by Honourable Chief Minister. So, Honourable members are requested to proceed to banquet hall for lunch at 12:30 p.m. Now I adjourn the House sine die.